Now today we are going to see one relationship between the relativistic energy and मोमेंटम। ये एग्ज़ाम में 2.5 मार्क्स के लिए ये पूछते हैं। E इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c to the power 4। Let us begin. Let a particle of rest mass m0 be moving with a velocity v. Its relativistic mass is m is equal to m0 upon under root 1 minus v square upon c square. Its मोमेंटम, हम जानते हैं मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, डिनोटेड बाय p है इज इक्वल टू m इंटू v है। वी ऑलरेडी हैव दिस इक्वेशन 1, दिस इज 2, 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करो, p इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू v। एंड वी ऑल्सो अभी हमने डिराइव किया इट्स एनर्जी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अभी इस इक्वेशन में है, अभी यहाँ से हम कुछ चीज़ें लेंगे, हम ये स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर में हमें क्या आंसर मिलता है देख लेते हैं। सो वी विल कंसिडर हैंस ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई की जगह पे आ जाएगा एम सी स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस पी हमें यहाँ से मिल चुका है, पी स्क्वायर है m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर द इंटू वी द होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अभी m के जगह पे भी हम पुट करेंगे m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस m0 v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ना ओपन कर लेते हैं तो m0 स्क्वायर सी टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। Now we will take 1 upon 1 minus v square upon c square कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आएगा m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 माइनस m0 स्क्वायर v स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। यहाँ से हम m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं, m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 कॉमन अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस m0 स्क्वायर एंड c टू द पावर 4 निकल गया यानी v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बच रहा है। नाउ दिस 2 विल गेट कैंसिल, सो e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c टू द पावर 4। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, e स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, देयरफॉर e इज इक्वल टू अंडर रूट थोड़ा सा p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c टू द पावर 4। हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया। Thus above
equation relates the relativistic energy and the relativistic momentum. Since the quantity m0 square c to the power 4 is invariant, ये invariant है, hence the quantity e square minus p square c square is also invariant for all the inertial frames, and when the particle is at rest, that is v equal to 0, the energy of the particle is E0 is equal to m0 c square, which is called the rest mass energy of the particle. Thank you.